So the unit 1, wonders of animal world. First point is echolocation in bat and cetaceans. So tell me what is echolocation? यहाँ पे आप लोगों के आंसर इंपॉर्टेंट है, ओके? तो जैसे भी मालूम है आपको, आपके ओन सेंटेंस में मुझे आंसर कर सकते हैं। आई हैव नो प्रॉब्लम, बट आंसर करना है। आई थिंक ऑल ऑफ यू नो व्हाट इज इकोलोकेशन। Location of objects. ओके, so echolocation means the location of object by reflected sound, in particular that used by animals such as dolphins hai, bats hai, right? Cetacean means dolphin or whales. So human echolocation is the ability of human to detect objects in their environments by sensing echoes from those objects by actively creating sounds. So when an animal emits a sound wave that bounce off an object, okay, animal emits a sound wave that bounce off an object, returning an echo that provide information about the object distance and size. So echolocation is the technique. Echolocation एक technique होती है used by a bats, dolphins. Cetacean is a dolphin and whales. Okay. Cetaceans किसको बोलते हैं? जो marine mammals होते हैं, marine mammal of the order Cetacea, a whale, dolphin, or porpoise. These are cetaceans, means marine mammals of the order Cetacea. So echolocation is a technique used by bats, dolphins, means cetaceans and other animals to determine the location of object using a reflected light. Okay, this allows the animals to move around in pitch darkness, so they can navigate, hunt, identify friends and enemies, and avoid obstacles. So this is a echolocation. तो हमको यहाँ पे इकोलोकेशन पढ़ना है, इकोलोकेशन इन बैट्स एंड cetaceans. Okay. Now the next point is the mechanism of pearl formation in mollusca. सुने कभी mollusca? Yes. Molluscas are a mollusca or molluscus are a soft bodies. Soft body होती है ना, soft body invertebrates of the phylum mollusca, usually wholly or partly enclosed in a calcium carbonates. Enclosed होता है वो, enclosed in a calcium carbonate shell secreted by a soft mantle covering the body. This is a list of notable mollusks, or order is a alphabetically by class, also include are extinct mollusks. So pearl formation happen when a foreign body become a lodged inside the molluscus mantle. Molluscus mantle means an organ similar to skin that form the lining of the molluscus shell. The molluscus form a sac around the irritant and then secrete nacre around it. उस जो molluscus होता है वो secrete करता है, secrete nacre around it. As the layer of nacre built, the pearl grows. Okay. तो यहाँ पे हमको पूरा mechanism पढ़ना है, whole mechanism of pearl formation in mollusca. Next point is a bioluminescence. आई थिंक इस पे आप लोगों को प्रैक्टिकल है बायोल्यूमिनेसेंस पे. बायोल्यूमिनेसेंस मीन्स कौन से एनिमल्स होते हैं? एनीवन नोस? यहाँ पे देखो दिए हुए एनिमल्स के नेम कुछ लाइक नॉक्टिलिका, देन ग्लोवर्म, फायरफ्लाई, एंगलर फिश है. तो हमको ये जो नॉक्टिलिका है, देन ग्लोवर्म, फायरफ्लाई है, एंगलर फिश, इसका मैकेनिज्म पढ़ना है, मैकेनिज्म एंड यूज फॉर द एनिमल.
So what are the bioluminescence animal and what is the bioluminescence? पता है आप लोगों को? No? Okay. So the emission of light from living organism. बहुत सिंपल मीनिंग होती है उसकी. क्या है? The emission of light from a living organisms such as fireflies, dinoflagellates and bacteria as the result of internal typically oxidation or a oxidative chemical reaction. Also the light so produced. जो एनिमल लाइट प्रोड्यूस करते हैं उनको हम क्या बोलेंगे? बायोल्यूमिनेसेंस. ओके. तो बायोल्यूमिनेसेंस ऑकर थ्रू अ केमिकल रिएक्शन बिकॉज ऑफ वहां पे केमिकल रिएक्शन होती है ऑर्गेनिजम्स में जिसकी वजह से क्या होता है वो लाइट इमिट करते हैं. मीन्स बायोल्यूमिनेसेंस ऑकर थ्रू अ केमिकल रिएक्शन दैट प्रोड्यूस लाइट एनर्जी विद इन अ ऑर्गेनिजम्स बॉडी. For a reaction to occur, a species must contain luciferin. वो जो species होते हैं वो क्या contain करता है? Luciferin contain करता है. A molecule that when it react with oxygen produced light. Okay? जब वो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करेगा क्या प्रोड्यूस करता है वो? लाइट. Reaction to occur, a species must contain luciferin, a molecule that when it react with oxygen produce light. So many organisms also produce the catalyst luciferase. कुछ जो organisms होते हैं वो क्या produce करते हैं? Catalyst luciferase is an enzyme which help to speed up the reactions. Okay. समझ में आया? What is bioluminescence? Bioluminescence is an amazing natural phenomenon in which an organism produce and emit light due to a chemical reaction where the chemical energy is converted into a light energy. सिंपल डेफिनेशन होती है बायोल्यूमिनेसेंस की. जो ऑर्गेनिजम्स लाइट इमिट करेंगे इज कॉल्ड एज अ बायोल्यूमिनेसेंस. वहां पे केमिकल रिएक्शन होती है. सो द केमिकल रिएक्शन वेयर द केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू अ लाइट एनर्जी. ओके. होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज बायोल्यूमिनेसेंस. Next is the regeneration in animals. Regeneration in animal like earthworm, annelida, and a lizard, reptiles. Regeneration is a natural process होता है that allows plants and animal to replace or restore damaged missing cells or a tissue, organs, and even an entire body part to full function. Okay, natural process है regeneration that allow plants and animal to replace or restore damage or a missing cell. वहां पे वो रिस्टोर करता है, रिप्लेस करता है जो डैमेज पार्ट होते हैं. यहाँ पे एग्जाम्पल भी दी हुई है. यहाँ पे जो दो एग्जाम्पल है एनिमल्स के. फर्स्ट इज अर्थवर्म लाइक एनेलिडा एंड दो स्पेसीज है लिजार्ड, रेप्टाइल्स. So organism regenerate in different ways. Plants and some sea creatures such as a jellyfish होती है then can replace missing part by extensively remodeling their remaining tissues. Some animals such as lobster egg, catfish and lizards replace missing part by first growing a specialized bird of cell called as a blastema. Now the next point is the mimicry in butterflies. Mimicry in butterflies and its significance. Mimicry in butterflies come in two main forms, Batesian and Mollarian mimicry. Batesian mimics are harmless species that mimic poisonous or unpalatable species, whereas the Mullarian mimics are noxious species that mimic each other. Okay, so mimicry is the similarity of one organisms. The mimic
another, the model that enhance the mimic fitness through its effect on the behavior of a third party. Okay, mimicry क्या होती है? Is the similarity of one organisms to another that enhance the mimic fitness through its effect on the behavior of the third party. तो यहाँ पे जो मिमिक्री दी हुई है, मिमिक्री इन बटरफ्लाइज एंड इट्स सिग्निफिकेंस, उसमें कुछ पॉइंट स्पेसिस के नेम दिए हुए, ग्रेट एग फ्लाई एंड कॉमन क्रॉ, कॉमन palm fly and plain tigers. Okay, we have to learn in detail. Then next is the mechanism of coral formation and type of coral reefs. इस पे भी आपको प्रैक्टिकल्स है, कोरल रीफ के डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोरल रीफ्स आइडेंटिफिकेशन के लिए आता है मोस्टली. मैकेनिज्म ऑफ कोरल फॉर्मेशन. कोरल रीफ इज एन, कभी सुने आप लोगों ने कोरल या फर्स्ट टाइम ही सुन रहे हैं? व्हाट इज कोरल? Yes. Anyone knows what is coral? Are you listen my voice now? My audio is audible? Yes. Okay. The coral are a marine invertebrates. Okay. Corals क्या होता है? Marine vertebrate within the class Anthozoa of the phylum Cnidaria. They typically form a compact colonies. मरीन वर्टिब्रेट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, टिपिकली कॉम्पैक्ट कॉलोनी फॉर्म करते हैं of many identical individual polyps. Coral species include the important reef builders that inhabit tropical ocean and secrete calcium carbonates. Secrete करता है वो calcium carbonate to form the hard skeleton. Okay. Coral reefs are the corals are a marine invertebrate within the class Anthozoa that typically forms compact colonies of many identical individuals. And coral species include important reef builders that inhabit tropical oceans and secrete calcium carbonate to form a hard skeleton. A coral reef is an underwater ecosystem. यहाँ पे हमको क्या दिया हुआ है, मैकेनिज्म ऑफ कोरल फॉर्मेशन. तो ये मैकेनिज्म पढ़ना है पूरा, कोरल फॉर्मेशन कैसे होता है, फॉर्मेशन कोरल का, एंड टाइप्स ऑफ कोरल रीफ्स. तो कोरल रीफ इज एन अंडर वाटर इकोसिस्टम कैरेक्टराइज्ड बाय रीफ बिल्डिंग कोरल्स. Reefs are a formed of colonies or a coral polyps held together by calcium carbonates. अभी हमने पढ़े कि कोरल जो होता है वो क्या करता है, सीक्रेट करता है कैल्शियम कार्बोनेट्स टू फॉर्म अ हार्ड स्केलेटन. ओके, तो हमको यहाँ पे कोरल रीफ के टाइप्स देखने हैं. So coral reef generally divided into a four classes like a fringing reefs, barrier reefs, atoll and a patch reefs. हमको ये टाइप्स पढ़ने कोरल रीफ के. देयर आर फोर टाइप्स ऑफ कोरल रीफ like fringing reefs, barrier reefs, atoll and a patch reef. So fringing reefs grow near the coastline around the islands and continents. They are separated from the shore by narrow, the shallow lagoons. Fringing reefs are the most common type of reef that we see. Okay, common type होती है फ्रिंगिंग रीफ, जो है वो कॉमन टाइप होंगी इसमें. नेक्स्ट इज द बर्ड माइग्रेशन. तो बर्ड माइग्रेशन में हमको उसकी डेफिनेशंस देखनी है, डेफिनेशन, टाइप एंड फैक्टर इंड्यूसिंग बर्ड माइग्रेशन. Bird migration is the regular seasonal movement, right, of a north
and south along a flyway between the breeding and wintering grounds. Next point is the adaptative features of a desert's animal. Adaptative features of a desert's animal or adaptation of desert's animal. So, firstly, मुझे ये बताओ what is meaning of adaptation? Yes, I'm asking a simple question. What is adaptation? No one knows. सुने कभी? Don't chat. Directly बोलो. Yes. Adaptation means a change in structure, change in function or behavior by which the species or an individual improves its chance of survival in a specific environment. और इसे अगर अपने own sentence में बोलेंगे तो it's mean modification. Okay? Adaptation means modification. Means change in structure. किसी भी एनिमल में जो चेंजेस होते हैं, चेंज इन structure, function, behavior, and his species or an individual improve its chance of a survival in a specific environment. Okay? The process of change by which an organism or a species become better suited to its environment is called as adaptation. Okay? Hope you understand what is meaning of adaptation. आया ना समझ में सबको? No one replying me. नेटवर्क की वजह से आपकी आवाज ही नहीं आ रही थी। मतलब समझ में ही नहीं आया what is adaptation. नो मैम। Okay. अभी तो आ रही है ना? यस। Yes, ma'am. Okay. So adaptation means change in a structure, function, or a behavior by which a species or an individual improve its chance of survival in a specific environment. Okay? जो एनिमल है या फिर स्पेसिस में जो चेंजेस होते हैं, a change in a structure, function, or behavior by which a species or individual improve chance of a survival in a specific environment. Or we can say adaptation means a modification. अगर हम उसको own sentence में बोलेंगे what is adaptation means modification means the process of change by which an organism or a species become a better suited to its environment. Okay, now hope you understand what is adaptation. समझ में आया आप लोगों को what is adaptation? Yes, ma'am. ओके यस मैम। यहाँ पे हमको क्या दिया है 1.8 में एडेप्टिव फीचर्स ऑफ अ डेजर्ट्स एनिमल। तो एडेप्टिव फीचर्स पढ़ने हमको डेजर्ट्स एनिमल के लाइक रेप्टाइल, ट्राइनोसोमा एंड मैमल्स, कैमल। ओके, मैमल्स में जो है कैमल देखना है, कैमल के एडेप्टिव फीचर्स देखने हैं। मीन्स नॉक्टर्नल डेजर्ट्स एनिमल कीप कूल बाय बीइंग एक्टिव एट नाइट, whereas some other deserts animal get away from the sun's heat by digging underground burrows. Then other common adaptations seen in desert animal include a big ears, light color coats, उनके कलर कोड्स भी लाइट कलर्स होते हैं,
pump to store a fat, and adaptation that help conserve water. Okay. यहाँ तक समझ में आया सबको? Yes, ma'am. Next topic we will see in Yes, next ma'am. lecture because time is up. Yes. We should stop here. Thank you. Yes, ma'am.